All right, ladies, a very, very good evening to all of you. I hope you guys are doing good. A digital hi to everyone. And let me see some pretty faces across the screen. Okay, great. So let's get started. Welcome to your Talent Round 2's training. This one is going to be a really fun one because we have a makeup artist on board, and I'm sure you must have gotten another link for 8th, which is for the photography with an influencer. So I will be giving out the details for Talent Round 2 in the end, like always. So make sure you stay tuned till the end. And you would be only asking questions related to the makeup, skincare, and everything to the respective professional. Nothing related to Talent Round 2. So confuse mat hoega. Uske details bifurcate karke I will be giving out. And about everything related to her field, Asmita will be taking over. So let's welcome Asmita Arya, who is a professional certified makeup artist, our FSIA trainer for the day. She freelances and is creates content on Instagram regarding makeup, beauty, and self-care for that matter. So hi Asmita, how are you? Hi, I'm all good. How are you all? Okay, so for everybody bothering about Asmita's voice, वो 1 minute में dilute होके ठीक हो जाएगी. Do not worry, okay? So it just takes time to pop up. So I think there is no reason to wait. Asmita is taking over, and over to you, Asmita. Welcome on board. First of all, hi everyone. Thank you so much for having me. So, today's session will be all about a very natural looking makeup look so that you guys can look good in and out of your pageants. So, today I'll be teaching all the basic makeup techniques so that you'll get to know how to buy and how to do your makeup. So, let's just quickly start. I'll be demonstrating on myself and will be showing you the products also according to your skin type and then suggesting a few so you can write it down. So, Okay, just to interrupt, Asmita, I'm so sorry. I would request everyone to, put Asmita on speaker view so it's easier for you guys to view her, onto details because she would be showing some products as well. So just pin her onto speaker view and you guys would be good to go. Over to you, Asmita. You can continue. okay, so before starting with makeup, I would first like to talk about skincare, which is equally important when it comes to makeup. So, while we do our makeup, now it's very important कि हम अपना prep करें अच्छे से skin पहले. So the steps are CTM, which is cleansing, toning, and moisturizing. So first I'll do cleansing. I have washed my face. Now I'm sitting barefaced. There's nothing on my face. I'll still use a wet wipe to clean. And before doing makeup, मेक श्योर कि कोई भी आपका रेसिड्यू मेकअप का या कोई भी आपका काजल ना लगा हो, लिप शेड ना लगा हो, अदरवाइज आपके बेस में वो मिक्स हो सकता है एंड इट वोंट लुक नाइस. सो जस्ट मेक श्योर यू जस्ट क्लीन योर फेस वेल एंड कोई एक्सेस ऑयल होता है वो भी हट जाता है इफ यू क्लीन इट फर्स्ट. सो या नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग. Now, when we clean our face using a face wash or maybe an exfoliator, when we deep clean, but now cleansing can be done in two ways. It can be either a quick cleansing, which I did using a face wash and then a wet wipe. It can be done in a deep way also, which is like exfoliating when you get cleanups done, like maybe once a week or twice a month. So my next step will be after cleansing, toner. Now toner is basically to close your open pores. जब भी हम क्लेंस करते हैं किसी भी चीज से, बीट योर फेस वॉश और योर वेट वाइप और अ स्क्रब, तो आपके जो पोर्स होते हैं दे टेंड टू ओपन अप, तो उनको क्लोज करना बहुत जरूरी है बिफोर अप्लाइंग एनी केमिकल प्रोडक्ट. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ टोनर which is from a brand called Aroma Magic. Now it's a very affordable brand. All the brands I'll be using, I'll prefer कि सारे affordable range में हो ताकि क्योंकि आप beginners हो, so you guys can like invest less अभी and explore more products. So this is from Aroma Magic and always buy skincare according to your skin type. ठीक है, आपके different skin types होते हैं लोगों के, किसी के dry होती है, किसी के normal, combination, oily, sensitive, acne prone. तो अपना आप अपना अकॉर्डिंगली ही स्किन केयर बाय करोगे. एंड देयर इज अ टिप कि जिनकी भी स्किन ड्राई नॉर्मल टू ड्राई इसमें रेंज में लाई करती है, ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट्स विच आर क्रीम बेस्ड और ऑयल बेस्ड. ठीक है, उससे आपका एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मिलता है. एंड द पीपल हु हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन, तो वो ऑलवेज प्रेफर बाइंग अ जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स और मे बी अ फोम बेस्ड. Now, ये आपको फॉलो करना है, बीट योर फेस वॉश, योर क्लेंजर, योर टोनर और मे बी योर मॉइस्चराइजर. So this is a toner.
I'll just spray it. And always make sure कि हर स्टेप में एटलीस्ट 1 मिनट 30 सेकंड टू 1 मिनट का ब्रेक हो, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में. एंड ये आप फॉलो करोगे ना फिर रेगुलर रूटीन में भी, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्किन. अल्टीमेटली आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपको मेकअप भी बहुत लेस प्रोडक्ट यू विल बी यूजिंग, इतना कवर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी. Now my next product will be a moisturizer. I'm done with CT. Now it comes to M, which is a moisturizer. Now this is a Pond's gel based cream. Okay, so this is for very good for those who have combination skin like mine. I have a combination skin, so I'll be using a product which is gel based or maybe a water based product. So this is very good. And for those who are having a dry skin problem, they can go for a brand called Cetaphil. It's easily available even on chemist stores. You can use that. So now I'll be just applying it a very generous amount. और जितना अच्छे से आपका स्किन प्रेप होगा ना, उतना ही फ्लॉलेस आपका बेस आएगा. And don't skip on toner especially. So yeah, I have done using a moisturizer. अब मार्केट में और दो प्रोडक्ट्स भी आते हैं which is called a serum and a face oil. ठीक है, तो इनका क्या यूज होता है? तो जो सीरम्स होते हैं, दे आर बेसिकली टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम, लाइक यू माइट हैव एन एक्ने प्रॉब्लम और मे बी एक्सेस ऑयल आता है आपकी स्किन पे, या आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत है, तो तब आप सीरम्स लेते हो अकॉर्डिंगली. एंड सीरम शुड ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर अ मॉइस्चराइजर. एंड व्हेन इट कम्स टू फेस ऑयल्स, तो फेस ऑयल वो यूज करते हैं जिनकी स्किन पे एक्स्ट्रा लाइक बहुत ड्राइनेस है, फ्लेकी स्किन है, तो यू कैन मिक्स इट विद योर फाउंडेशंस और मे बी यू कैन यूज इट आफ्टर योर मॉइस्चराइजर for that extra shine glow on your face. And oily skins को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए. Combination skin में जिनकी ये T-zone oily होता है, तो avoid over here. Okay, so my next will be a primer. Now primer is basically to create a barrier between your skin and your makeup. ठीक है, और दूसरा काम ये होता है कि आपके कोई भी ओपन पोर्स हैं जिनके बहुत एक्सेस ओपन पोर्स होते हैं, या फिर आपके व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या कोई बम्पी स्किन है, तो उन पे आप प्राइमर लगा के उसको एक लेवल कर सकते हो ताकि एक स्मूथ सरफेस मिल जाए आपको मेकअप अप्लाई करने के लिए. सो आई एम टेकिंग अ वेरी मिनिमम अमाउंट, अ ड्रॉप, एंड दिस इज फ्रॉम कलरबा. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. इट इज वेरी अफोर्डेबल एज वेल और ये काफी अच्छा. एंड नाउ इट इज अ सिलिकॉन बेस्ड, अगेन वेरी गुड फॉर पीपल हैविंग एन ऑयली स्किन. लाइक आई एम कॉम्बिनेशन, तो मेरे टी जोन पे बहुत ऑयल आता है, तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं इसको अच्छे से अपने यहाँ लगाऊं जहां जहां मुझे एक्सेस ऑयल की प्रॉब्लम है. एंड रेस्ट आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माय फेस. और मुझे नीड नहीं लगती कहीं, क्योंकि थोड़े मेरे लेवल्ड है स्किन, बट अगर मुझे लगता है कि मेरे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या फिर मेरे ब्लैक हेड्स है इधर, तो उन पे आई अच्छे से अप्लाई इट. ओके, so next step will be correcting our skin or maybe concealing our problems. So अब आप जैसे मेरे फेस को देख सकते हो, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है. अब I do CTM on a regular basis. Honestly मेरी स्किन में तो बहुत डिफरेंस आया है because I keep it clean. मॉर्निंग स्किन के रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करो, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ आई हैव एक्ने स्कार्स ऑन माय फॉरहेड, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, रेस्ट थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अनइवन स्किन है मेरी अराउंड माय नोज, नोज कह रही हूँ, अराउंड माय माउथ. सो बेसिकली जनरल एरियाज होते हैं जिनको लोगों को भी होता है कि आपके अंडर आई में डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, तो फॉर दैट यू यूज अ करेक्टर. नाउ करेक्टर्स आर ऑफ 2 कलर्स बेसिकली. ऐसे तो बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत कलर्स के होते हैं अलग अलग, बट जो मेन यूज होते हैं ना वो होते हैं ऑरेंज एंड ग्रीन. सो ऑरेंज करेक्टर इज बेसिकली टू कंसील योर करेक्ट योर डार्क ब्राउन प्रॉब्लम्स, बेसिकली मे बी योर डार्क सर्कल्स जो बहुत पिगमेंटेड होते हैं, योर पिगमेंटेशन, योर एक्ने स्कार्स लाइक दिस जो ब्राउन हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस फॉर दैट वी यूज अ ऑरेंज करेक्टर. एंड फॉर द प्रॉब्लम्स which are red in color, basically maybe your sensitive areas, कईयों के cheeks बहुत red रहते हैं, या active acne जो निकलता है, उनको conceal करने के लिए we use a green corrector. So these are the 2 basic correctors we use. Okay, so जिन लोगों को बहुत ज़्यादा major problem नहीं है कि उनको लगता है कि मेरा concealer से भी काम हो जाएगा, I don't need a corrector for that. So next step is the concealer.
लाइक फॉर पीपल लाइक माई स्किन, अब मुझे लगता है कि मेरे फेस पे बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे करेक्टर यूज करना पड़े. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ डार्क कंसीलर. सो हाउ डू यू चूज द करेक्ट शेड? जो भी आपका फाउंडेशन होता है ना, इट शुड बी एग्जैक्टली योर स्किन कलर. ठीक है, जो आपका फाउंडेशन होगा, यू ऑलवेज टेस्ट इट हियर ऑन योर जॉ लाइन एंड यू मैच इट विद योर नेक, ताकि आपका ये और ये चीज सेम लगे, आपका फेस और आपकी नेक. तो जो आपका कंसीलर होगा ना, दैट शुड ऑलवेज बी 2 to 3 शेड्स डार्कर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप कंसीलर हमेशा डार्क लोगे अपने फाउंडेशन के शेड से. एंड सो दिस इज वन फ्रॉम LA गर्ल, LA प्रो गर्ल. नाउ दिस इज वेरी लाइट कंसिस्टेंसी. अब आप कभी भी फाउंडेशन लेते हो, कंसीलर्स लेते हो, तो इनमें कंसिस्टेंसी होती है. कई होते हैं बहुत लाइट कवरेज, कई होते हैं बहुत हैवी कवरेज वाले. तो वो भी आप अगेन यू बाय अकॉर्डिंग टू योर स्किन, कि आपको लगता है कि आपको बहुत पिगमेंटेशन इशू है, तो यू गो फॉर अ हायर कवरेज वन, जिसमें आपका सारा कुछ हाइड हो जाता है. एक होता है लाइट कवरेज, जो आपको बहुत नेचुरल लुकिंग देता है. तो दिस वन इज अ लाइट कवरेज. आई यूज इट फॉर माई डार्क सर्कल्स. And today I won't be using a foundation. I'll show you how we can just, like, on a regular basis, we don't apply foundations. Either we go for some BB cream, CC creams, but it is very important to conceal your dark spots, because वो BB cream और CC cream का काम नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत ही thick light consistency होती है, and it's just to give a very sheen coverage. So I'm just applying it wherever I think कि मेरा थोड़ा बहुत unevenness है. Now this is 2 shades darker than my foundation shade. अब जैसा ये होता है, जैसे एक ये था लाइट कंसिस्टेंसी. नाउ दिस वन इज फ्रॉम मेबेलिन एज रिवाइंड. नाउ दिस इज वेरी हाई कवरेज. अब जिनको लगता है कि मेरे थोड़े स्किन से बहुत डार्क है, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स हो गए, तो आप ऐसा हाई कवरेज वाला कंसीलर लो rather than a light coverage. So I'll just use my fingers. That is the best possible way to blend it. वैसे generally since I do professionally, तो मैं brushes use करती हूँ. So I'll show you with the brush as well. दिस इज द कंसीलर ब्रश. और कोई भी लिक्विड चीजों को ब्लेंड करने के लिए ब्रश होता है, तो वो बहुत थिकली पैक्ड होते हैं. आप पाउडर ब्रश देखोगे ना, वो बहुत फ्लफी होते हैं. और जो फाउंडेशन कंसीलर्स को ब्लेंड करने के ब्रश होते हैं, उनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. सो आई विल जस्ट यूज अ ब्रश. And can you see, I'm just blending it in tapping motion. I'm not rubbing it on my face. Even if I was using a beauty blender, I would just tap it, because this is the correct way. अगर आप उसको ग्लाइड करोगे अपनी स्किन पे, तो इट विल क्रिएट स्ट्रोक्स, एंड वो एक फिनिश नहीं देता, स्मूथ फिनिश. Just see in the mirror first. Just quickly, I'm tapping it. Now this is a technique when you skip on foundations. What you do is, अब जैसे मैंने कंसीलर लगाया, अब कंसीलर तो 2 शेड डार्क था मेरी स्किन से, तो इट विल मेक माई स्किन डार्कर. अब वो इवन आउट नहीं हुआ, मेरी स्किन लाइट है और वो कंसीलर डार्क था. तो व्हाट इज द ट्रिक यू कैन डू to skip a foundation? Basically, you can go for a 2 shade darker concealer and then cover it with a 2 shade lighter concealer. Now this will correct your darkness as well, और आपका सेम शेड भी रहेगा जो आपके फेस पे चाहिए था. क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली वो लाइटर लगा देती तो मेरा वो ग्रे पड़ जाता, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो डार्क है ना. सो दिस इज द वे यू कैन स्किप अ फाउंडेशन, अगर आपको लगता है कि आपको डेली बेसिस पे इतनी थिक कवरेज नहीं वेयर करनी है. Now I'll be using this concealer. This was a little darker. Now this is a little lighter in shade, which is exactly my shade. Maybe a little lighter also. Just a second. I just got a new one, so it's just fresh. And for those जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ कंसीलर लगा के and you can wear a compact and it's good to go, so you can obviously go for this one. This is very good. Age Divine Concealer from Maybelline. Coming.
So I'll just apply जहां जहां भी मैंने अपना डार्क कंसीलर लगाया था. This is just another way to skip your foundation basically. क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं लगती कि मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊं. I do like this. अगर मुझे फाउंडेशन लगाना तो दैट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप. मैं डार्क कंसीलर से कंसील करती और इसकी जगह मैं एक फाउंडेशन यूज करती. And using the same brush. Okay. So now I feel like it's pretty much good for me, good coverage for me. कहीं और मुझे लगेगा तो I can just reapply it. Now I'm done with my cream products, which is basically all my CTM, primer, then my concealer, and then my foundation or maybe a concealer. So now I'll need to lock it. जब भी आप कोई cream products apply करते हो, be it anything, you should always lock it using a powder product. This is the technique. This is the right technique to do. अगर आप फाउंडेशन को ऐसे ही छोड़ दोगे ना, it will move. आपका हाथ लग गया गलती से तो आपके हाथ पे आ जाएगा. So it's very important कि आप एक compact लेके, I use from MAC. You can go for Calabar. Calabar का बहुत अच्छा है. L'Oreal का भी बहुत अच्छा है. Even Forever 52. So I'll just pat it. इसको भी मैं ड्रैग नहीं करूंगी. You just need to pack it. Because आपके नीचे फाउंडेशन लगा हुआ है, you don't want it to move. So just pack it, tapping motion में ही. Now this compact is also exactly my skin tone. Foundation और जो compact होता है, that should be exactly your skin tone. If you don't want कि आपका जो base है वो grey हो, क्योंकि ultimately अगर आप चाहो, कई लोग सोचते हैं कि जैसे मेरा स्किन टोन है, I want a little lighter tone on my face. लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए तो आप दिखोगे कि आपका एक टोन अप हो रहा है, थोड़े गोरे दिखोगे बेसिकली, बट आफ्टर like 2 hours or 3 hours it will start fading and वो ग्रे पड़ने लग जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फाउंडेशन. So there's no point. So yeah, I am done with my base for now. Now I'll quickly move on to contouring, blush and highlight. ठीक है. So contour is this I have. This is from Benefit Hoola. Now this is a little expensive side. उसकी इसका मैं same dupe बताऊंगी आपको. Dupe is basically a product which works exactly the same, लेकिन उसका price कम होता है. So इसका बहुत ही अच्छा dupe है, which is in Wet n Wild. उसकी आती है contour kit. Now contouring is done to basically accentuate your face. Like आपका अगर chubby face है, like you can see I have cheeks, I have little double chin. So I just need to make my face look a little slim. ठीक है, I don't want कि मेरी double chin show हो. Now it creates an illusion. It will not cut down my fat. लेकिन अगर मैं screen पे हूँ, मैं picture click कर रही हूँ या video में, तो it will look like कि actually में slim दिख रहा है face. So for my double chin, I'll correct it this way. I'll just create a line on my jawline and shade it outwards like this. Similarly on this side. Basically from your जहाँ पे आपका ear खत्म हो रहा है and towards your chin. And for double chin, we'll just do like this. मतलब वहाँ मैं एक shadow create कर रही हूँ कि वो चीज़ दब जाए मेरे और face पे. अब now to contour my cheekbones, I'll go this way. This is the point. ये आपका ear की starting and towards your lip. Like this is the area where you need to apply the contour. अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. This is the correct way. जिस direction में आपका होना चाहिए contour. ठीक है, this will create an illusion of a slimmer face. Similarly, this way is ear के top से and towards my lip. And I'll just blend it. अब contour भी आपके face shape के according होता है. कई लोगों का face लंबा होता है, तो you will do contour on your jawline and on your forehead to make it look shorter. Now I have a wider face, so I want to make it look slimmer. तो तब मैंने इसको side से contour करा है. ठीक है?
And for my nose also, I'll just contour it from one side. Basically, you have to create two parallel lines. तो जितना आपका ये चीज पतली दिखेगी उतनी ही शार्प नोज दिखेगी. So this way I'll just quickly contour my nose. इसे बोलते हैं हम ब्रिज ऑफ द नोज. तो ये जितना पतला ब्रिज दिखता है दोनों साइड से आप इसे कॉन्टोर करोगे उतनी ही शार्प आपकी नोज दिखती है. करंटली आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी नेचुरल लुक, तो आई डोंट वांट कि बहुत शार्प दिखाऊं मैं. बट यू माइट हैव सीन ब्राइडल मेकअप्स, इंस्टाग्राम पे इतने ट्यूटोरियल्स आप देखते होगे, तो जस्ट ऑब्जर्व कि वो ऐसे टू लाइंस ड्रॉ करते हैं बहुत डेफिनेशन से, एंड देन जस्ट लॉक इट हियर वी बना के, ठीक है, एंड देन यू ब्लेंड इट. Okay, so next step will be blusher, and it should be this way only. जब आप मेकअप अप्लाई करते हो पहले कॉन्टोर लगता है, फिर ब्लश लगता है, फिर हाइलाइटर लगता है. So my blusher, this is from Sugar. Now Sugar has an amazing blusher and a highlighter and even a contour. उसका भी आप ले सकते हो. Sugar की पूरी पैलेट आती है जिसमें तीनों चीजें होती हैं. So for my blush, and again I'm using a fluffy brush now. As you can see, I'm using all the powder products, so I'll go for fluffier brushes. And smile. And I'll just apply it on my blush, उस पे contour के ऊपर. Contour से नीचे नहीं जाना चाहिए. कई लोग blush apply करते हैं उनका यहाँ तक गया होता है, which is not right. It should be on your, when you smile, आपकी ये apple of the cheek है, इस ही direction में होना चाहिए आपका. Now there's a tip also कि जब भी आप blusher apply करते हो तो आप जब भी जिनका chubby face है, बहुत आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा face है, chubby face है, तो don't apply it on the apple of your cheek. ठीक है, this way you will enhance it more. आपका और chubby लगेगा cheek. मतलब it's a personal choice, but if you ask me, तो I always apply it this way in upward motion so that it looks like कि मेरा face lifted लगे. ठीक है, when I smile, तो I don't want कि मेरे ये और enhance हो के और बाहर दिखे. So this way it's better for the people who are having chubby face. Otherwise, it's completely your choice. Okay, so my next step will be a highlighter, but before that, I'll just quickly fix my face, my makeup, using a makeup fixer. This is from NYX. Affordable, but this is the best one. और किसी brand का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. बाकी this I am putting before highlighter, ताकि highlighter के जो particles है ना वो अच्छे से stick कर जाए मेरे face पे. अगर मैं अभी ड्राई फेस पे लगाऊंगी ना तो वो इतना ग्लो नहीं दिखाएगा जितना इसके बाद दिखेगा. So I'll just spray it again. Just let it semi dry, पूरा dry भी नहीं होने देना. And till then highlighter. Now highlighter is basically to highlight your high points आपके face की. So आपके high points क्या होते हैं? जब मैं आपको side face दिखाऊंगी ना तो जो चीजें बाहर है मेरी, my bridge of my nose, my forehead, my cupid bow, my chin, and this way my cheekbones. तो ये चीजें मुझे highlight करूंगी. Basically मैं light के नीचे आऊंगी तो ये चीजें मेरी highlight होंगी. I'll show you how. Now this is a highlighter brush. Taking this highlighter and I'm sitting under a light right now. See, I just applied it and जब मैं light का reflection बनेगा ना तो यहाँ पे ये चीज highlight कर रही है. So basically ये काम है highlighter का. And this is why my favorite product. I put a lot of it. Now on my bridge of my nose, on my cupid's bow, you can instantly see a glow over there. And on my forehead. Okay, so like this, you can create a very wet, dewy face. Dewy is basically a glowy, fresh base. Okay, so we are done with the base. Now it comes to eye makeup. So before that, अब जैसे लोग हर किसी की अपनी preference होती है. Either you do your eye makeup first or you do your base first. ठीक है, अब जैसे मुझे बहुत ही subtle सा eye makeup करना तो I did my base. So what I'll do, I'll just take a loose powder. Now loose powder is basically compact. Compact pressed होता है, ये loose form में होता है. ठीक है, तो I'll just put it under my eyes. ठीक है, this is the way you can prevent your eyeshadow from falling on your base. ठीक है, the meanwhile जब भी मैं अपना eyeshadow कर रही होंगी ना तो it will make sure जो भी उसका dust गिरता है, क्योंकि fall off तो होते ही हैं eyeshadows. ठीक है, तो जो भी वो गिरेगा वो इसके ऊपर गिरे and बाद में I'll dust it off. Now first I'll do my eyebrow. So this is a eyebrow pencil I use from Sugar. ठीक है,
So always go for a color which is lighter than one shade lighter than your hair color. Now you can see I have jet black hair, so I won't do my brows with a black color. Nobody does, क्योंकि black color से आपका बहुत ही fake shadow दिखता है आपकी eyebrow. क्योंकि naturally भी अगर हमारे बाल black हैं, हम उसे और black से अगर कर देंगे तो वो बहुत dramatic दिखती हैं. Always prefer to go for a dark brown shade or an ash shade like this. This is from Sugar number 02. Okay, so I'll just look into the mirror and do it. I'll just start filling the gaps. जहाँ पे मुझे लगता है in stroking motion. I won't create a line. I'll just create strokes like this. And I'll brush my hair in one direction. Now this is called a spoolie. अब ये हर पेंसिल के पीछे लगा हुआ नहीं आता. लगता है ब्रश बाय करोगे तो इसमें आता है. It's called a spoolie. This is basically to remove any excess product and to comb your hair in one direction. ठीक है. So and eyebrows make a very huge difference. एक बार you will get used to it. तो आपको लगेगा कि कहीं बाहर भी जाना है थोड़ा सा, तो you just feel like कि मैं अपनी eyebrow fill भी कर लूँगी ना, you will feel like कि there's a huge difference in your face. तो eyebrow की shape अच्छी होना is very important. And I'm not creating a block आगे. कई लोग ना यहाँ से शुरू करते हैं fill करना and they start creating a block which is not required, क्योंकि naturally भी हमारी जो brows होती हैं वो आगे से light होती हैं, पीछे से dark होती हैं. तो वही हमें follow करना है इसमें भी. ठीक है, like this. So yeah, I'll just see कि दोनों equal लग रही हैं. So yeah, eyebrows are done. Now I'll move on to a eyeshadow. So for eyeshadow, I'll just quickly create a base for my eye. Now eyeshadow base लेने की कोई need नहीं होती. You can use a concealer for that and just pat it and create a base for your eyeshadow, ताकि आपके जो eyeshadow हैं वो अच्छे से stick कर पाएं और उनको एक base मिल जाए कि उनका जो कलर है वो अच्छे से आ पाए. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमारी जो जैसे डार्क सर्कल्स हैं तो ऊपर भी जो आई का होता है एरिया वो डार्क होता है. तो वी मेक श्योर कि एक न्यूट्रल कलर रहे उसका. Like this, I just created a base. Now since I have applied a cream based product, I need to first pack it with the powder product. So I'm just using this color. This is a like very skin color, just to pack that concealer. Because I told you कोई भी cream product को powder से pack करना is important. You can either use a compact as well for this. Now for eyeshadows, I would say कि जो regular brands होते हैं जैसे कलरबा, मेबेलिन, लैक्मे, ये सब जो होते हैं ना, तो इनमें बहुत अच्छी वाइड रेंज नहीं मिलती आपको. You will always get a small palettes जिसमें maximum 10 to 15 shades होते हैं. So we tend to go for imported palettes जिनमें बहुत बड़ी बड़ी kits आती हैं, सारे shades होते हैं. लेकिन not always it's good कि जिसमें सारे shades होंगे वो palettes भी अच्छी होंगी. कई बार क्या होता है, उनको आप लगाते हो ब्रश से, उनको कलर ही नहीं आता. You blend it and it fades away. So always go for brands. I'm suggesting you a few. There's a brand called Beauty Glazed. Okay, this is also an imported brand, but it has a very good pigmentation in terms of application. And Revolution also, this is one I have from Revolution. And there's also a brand called You Can Be. ठीक है, तो ये दो तीन ब्रांड्स है. फॉरएवर 52 की बहुत अच्छी हैं. तो ये दो तीन ब्रांड्स हैं ऐसे जिनमें कलेक्शन भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, पिगमेंटेशन भी अच्छा होता है और अफोर्डेबल भी होती है. ठीक है, so now I'm using this palette. It's a very basic palette. I'll just take a fluffy brush like this. And okay, let me just take this peach color. Okay, I'll just go for brown color. ठीक है,
अब नाउ हाउ वी डू इट, जब भी आप अपने लिड पे जो शेड लगाते हो ना, यू नीड टू ब्लेंड इट यूजिंग अ लाइटर शेड. तो अगर मैं ये ब्राउन यूज कर रही हूँ तो आई विल ब्लेंड इट यूजिंग अ लाइट ब्राउन शेड. And this is how it goes with every color. You use a dark blue color, you blend it with a light blue, or maybe you're using a pink, magenta pink, you blend it with a light pink. So it goes like this. अभी मैं एक बहुत subtle सा दिखा रही हूँ आपको. अब आई मेकअप में तो बहुत variations होते हैं. So this is just a natural looking one, and जो आप regular basis पे लगा सकते हो. So I have taken that brown color. I'm just applying it on my lid. Just pressing it like this, roughly. ठीक है. एंड लिड क्या होती है, जब मैं अपनी आई खोल रही हूँ तो ये एक शेप बनती है आपकी. ठीक है, दिस इज योर क्रीज लाइन. ठीक है, दिस इज योर क्रीज लाइन. तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए वो कलर जो आप डार्क कलर यूज कर रहे हो. ठीक है, अब ये तो मैंने अपने लिड पे लगाया. नाउ आई नीड टू ब्लेंड इट, क्योंकि अब ऐसे हार्श लाइन तो रह नहीं सकती. सो आई जस्ट clean the brush on my hand and taking the lighter shade, let's start blending it like this in circular motions. This way you will just blend that harsh line and it will look blended throughout the eye. Like this. It has started blending now. Take one more color. And like this you blend it. ऐसे ही आप जैसे स्मोकी आई भी करते हो, कोई भी आई करते हो, दिस इज द बेसिक स्टार्ट. Just check it in the mirror. And आप ब्रश की रोटेशन देखो, इट्स जस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. दिस इज हाउ इट ब्लेंड्स. एंड मैं ब्रश को बहुत दूर से पकड़ रही हूँ. अगर मैं ब्रश को यहाँ से पकड़ती ना तो ब्लेंड नहीं होता. अगर मैं दूर से पकड़ूंगी, जितना लाइट मेरा हाथ चलेगा उतना अच्छा ब्लेंड करेगा वो. ठीक है, आई डू द सेम ऑन द अदर आई वेरी क्विकली. अब किसी को शिमर यूज करना है तो वो इसके ऊपर लगा सकता है. एंड शिमर शेड्स भी हमेशा लिड पे यूज होते हैं, नेवर अबव योर क्रीज लाइन. Look in the mirror and do. And just make sure कि दोनों साइड सेम हो कलर. ठीक है, लाइक दिस. अब मैंने एक बहुत न्यू एक ब्राउन स्मोकी सी आई क्रिएट करी है. मैं चाहती तो इसमें मैं ब्लैक ऐड भी कर सकती हूँ ऊपर, एज ऑफ माई विश, या कुछ शिमर शेड भी ऐड कर सकती हूँ. So we are done with the eyeshadow. Now I'll move on to a liner. A very thin liner I'll apply. अब लाइनर जिसको नहीं भी पसंद है लगाना, they can always apply a very thin layer ताकि एक डेफिनेशन मिल जाए आई को. अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कैसे. अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है कैसे आप एक लाइनर लगाते हो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा. So I just created a very thin line and instantly you can see it gives a definition to the eye. ठीक है. I'm just following my lash line. And my eyeliner is again from Sugar, क्योंकि मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है कि इसकी टिप जो है ना बहुत बहुत फाइन टिप है, बहुत पतली टिप है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर लैक्मे एब्सोल्यूट, या फिर आप मार्कर पेन्स भी ले सकते हो जिनको प्रॉब्लम होती है एक लिक्विड लाइनर में डील करने में. मार्कर पेन्स इज अ गुड ऑप्शन. I'm done with my liner. I could also have created a wing liner, but natural में मैं यही रखूंगी. Now I'll move on to a mascara. Mascara is the last step. Lashes भी लगाते हो तो it's a last step, क्योंकि जितना भी पाउडर हमारे आईज पे गिरा होगा. Wait, first let me just dust it off. Since I'm done with my shadow now, you can just dust it off.
Okay, so mascara. This is from Maybelline. This is the best so far I have used. Maybelline Lash Sensational. And even Forever 52 का आता है एक, वो भी बहुत अच्छा है. All these are very affordable. एक आता है L'Oreal का Lash Paradise. वो तो बहुत ही amazing है. And use just ऐसे करके, twist करके, like हम जैसे लगाते हैं ना ऐसे ऐसे. This is not the right way. You need to bruise it like this. इससे क्या होगा, आपकी रूट से लैश कर्ल होएगी अच्छे से. I don't know if it's visible on the screen. So this way. ठीक है. And for my under eyes, I will avoid using a black kajal because I feel like it makes my eye look more smaller. अब usually लोग black kajal लगाते हैं, but the logic behind is कि जब आपकी आंखें already छोटी है ना, तो prefer using a white और maybe a nude color का काजल. उससे आपकी eye open up दिखती है और ज़्यादा. ठीक है. अगर मैं black लगा लूँगी तो मेरी eye और छोटी दिखेगी. So very lightly I'll just wear a white kajal. इससे क्या होगा, और बड़ी आई दिखती है आपकी, ओपन अप दिखती है. ठीक है. जिन लोगों का थोड़ा डस्की ज्यादा कॉम्प्लेक्शन होता है, थोड़ा वीटिश साइड पे होता है, दे कैन गो फॉर अ न्यूड पेंसिल, क्योंकि वाइट थोड़ी उनकी फेस पे ड्रामेटिक दिख सकती है. एंड द लास्ट स्टेप इज अ लिप शेड. नाउ लिप शेड, इफ यू वांट कि आपकी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्टे करे, सो ऑलवेज गो फॉर लिक्विड मैट लिपस्टिक्स. ठीक है. जो बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं, जैसे नॉर्मल जो लिपस्टिक फॉर्म में होती हैं क्रीम वाली, तो उनका इतना लॉन्ग स्टे नहीं होता. ओके, इफ यू वांट टू मेक देम लॉन्ग स्टे, यूज अ लिप लाइनर. ठीक है. लिप लाइनर यूज करो एंड फिल योर लिप्स एंड देन अप्लाई इट. तो वो हट भी जाएंगे तो लिप लाइनर विल बी देयर. बट इफ यू वांट टू स्टे ऑन लिपस्टिक, तो गो फॉर लिक्विड वंस, लिक्विड मैट. एंड द बेस्ट वन आर फ्रॉम Maybelline Superstay. वो आप कुछ भी खा लो, नहीं हटती. I am using one from Smashbox. And जब ये lips होने चाहिए ना, it should be equal, your upper lip and your lower lip, in terms of your size, volume and shape. So just make sure. कई लोग होते हैं उनका लिप, अपर लिप बहुत पतला होता है और लोअर लिप बहुत बड़ा होता है, एंड दे उसके ऊपर वो लगा देते हैं. यू नीड टू एक्सटेंड योर लिप देन. So yeah, I just make sure कि जो अपर लिप है लोअर लिप इक्वल रहे. हल्का सा मैं बीच में से इसको एक्सटेंड करती हूँ मेरी नॉर्मल लिप शेप से. कभी भी एक्सटेंड करना हो तो बीच में से करो, साइड से मत करो. So yeah, that is all. This is the final look. And या कभी भी जैसे आपकी कोई जूम मीटिंग भी है, like it's very important to look presentable. आप एकदम bare face लेके बैठोगे ना, that won't look nice. तो either a CC cream, a BB cream, compact, concealers, कुछ भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर लोगे तो थोड़ा फेस ऐसे बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल दिखता है. इवन हाइलाइटर मेक्स सो मच डिफरेंस. सो या दैट वाज ऑल. आपको किसी को भी कोई डाउट है, आपको अपना पर्सनल लेके कुछ पूछना है, तो यू आर ओपन फॉर इट, यू कैन आस्क. Yes, Sarah, you can unmute yourself. I'm just asking, I have like this kind of face, so people are saying you don't need to contour your face because I have a small, very small face. So I have just this kind of issue of contouring. So what to do with that? So it's not important कि अगर कोई चीज है तो you have to apply it. But as of now, I can see if you want to contour, you can contour your cheek area, your cheekbones, and your nose. ठीक है. I tried to, but it looks more small than my. Well, avoid using a contour. मतलब it's not important. Important. So you can avoid it. You can apply a blusher. It will look good on your cheekbone, like on your apple of your cheeks. It will enhance your features. Thank you. Welcome. Okay, anybody else has a question for Asmita?
Asmita, I think there is somebody in the chat box. Yeah, I have a doubt. If you look up darker shade than face, how would you select the shade? Okay, so similarly, I told you कि आपको अपना neck match करना होता है face से. तो उल्टा भी हो सकता है कि आपकी neck dark हो और face light हो. Then you do the other way. आप अपना face से अपनी neck को match करो. जो आप अपना face का complexion create कर रहे हो. Like if you think आपके face lighter है, तो उसको अपनी neck को बनाओ. फिर neck पे जैसे dark concealer लगा के and then put a light foundation of your shade. So that will create that balance. If anybody has anything to ask related to even skincare or something like that, you can go ahead. Okay, Asmita, I think the women are sorted. Let me just share your Instagram details. So ladies, you could find Asmita on Instagram with the handle Asmita Arya MUA, and I've shared the details in the chat box as well. Make sure you do follow her. She also, ये जो tutorial आज उन्होंने put up किया है, she has also put a video on her Instagram and many more tutorials as well. So thank you so much, Asmita, for being here with us. It was an absolute pleasure having you. I wish you a great evening ahead. Thank you so much. Okay, great. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye-bye.